Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Paridhi, your dental mate, sharing with you my simplified versions of dental learning. This is the last intra-arch problem and its management we are talking about, which is midline diastema. We have covered already crowding and spacing. Now we'll be covering midline diastema. So midline diastema is what? It is basically a form of localized spacing, wherein what happens, there is space present between two central incisors. Okay, so this is also a type of localized spacing जिसमें there is space present between two central incisors. Okay, now if we talk about the etiology or the causes of midline diastema, see, a separate question was asked about the treatment of midline diastema and a separate question was asked about the etiology of midline diastema. So it is very important to read them all, because you need to have matter so that you can write it or attempt it as a 5-mark question. Okay, so if we talk about the etiology of midline diastema, so first of all, the first etiological factor, it could be normal or developmental. ठीक है, नॉर्मल या फिर डेवलपमेंटल हो सकता है. अब नॉर्मल या फिर डेवलपमेंटल में क्या है? सबसे पहला, इट इज़ फिजियोलॉजिक midline spacing, which is the ugly duckling stage. In ugly duckling stage, what happens is there is around 1.5 millimeters of space which is present between the central incisors in a child of 8 to 9 years of age. Okay, but then what happens when as the canine and the lateral incisors erupt, this space is automatically closed and it does not require any treatment. Okay, next is what? Next, there could be imperfect fusion in the midline of the premaxilla. ठीक है, जो भी premaxilla होगा, midline diastema, it can occur. What happens is, excise मतलब एक V shaped या फिर W shaped osseous septum could be present in the midline of the premaxilla, जिसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? ट्रीटमेंट, सर्जिकल एक्सीजन. ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट etiology भी, उसका ट्रीटमेंट भी. नेक्स्ट, इफ वी टॉक अबाउट द टूथ मटेरियल डिस्क्रिपेंसी और डेफिशिएंसी. सो द टूथ मटेरियल डेफिशिएंसी में माइक्रोडोंटिया और मैक्रोग्नाथिया, विच वी हैव कवर्ड ऑलरेडी इन स्पेसिंग. Microdontia if there are smaller tooth, then composite buildup or jacket crowns. Macrognathia, then there could be protraction of the tooth, of the molar tooth, or there could be composite buildup or jacket crown. Okay, next is what? Next is the missing or the extracted tooth. So the missing or extracted tooth में space जो है, it should be consolidated and it should be replaced with the bridge या फिर implant. नेक्स्ट है पेग लैटरल्स. सबसे पहले ऑर्थोडोंटिक करेक्शन करेंगे हम लोग डायस्टेमा का क्लोजर, उसके बाद पेग लैटरल को क्या करेंगे हम लोग? जैकेट क्राउन या फिर कंपोजिट बिल्डअप. नेक्स्ट इज व्हाट? फिजिकल रेस्ट्रिक्शन. सो अंडर फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस व्हाट आर देयर? it is retained deciduous or the over retained deciduous tooth. So the over retained deciduous tooth की वजह से what happens? There is ectopic eruption and midline diastema. ठीक है, so it has to be extracted at the earliest and फिर वापस से जो guided eruption या फिर midline diastema का correction. Then next is the mesiodens. So mesiodens को भी क्या करना है? extract करके space close. Enlarged frenum. Enlarged frenum पहले ब्लांच टेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से पता चलेगा फ्रीनम का लोकेशन. यहाँ हाई फ्रीनल अटैचमेंट है तो उसके बाद विल डू फ्रेनेक्टोमी. नेक्स्ट इज व्हाट? इफ देर इज एनी मिडलाइन पैथोलॉजी लाइक सिस्ट, तो हम लोग को सबसे पहले सिस्ट का ट्रीटमेंट करना है, उसको सर्जिकली एक्सीजन करना है, उसके बाद वी नीड टू क्रॉस द मिडलाइन डायस्टेमा ऑर्थोडोंटिकली. नेक्स्ट इज डीप बाइट. सी, डीप बाइट व्हाट हैपन्स? स्पेस क्लोजर के साथ साथ बाइट ओपनिंग भी करना पड़ेगा हम लोग को. ठीक है, नेक्स्ट habits. So there has to be elimination of the habit. Any persistent habit has to be eliminated for the correction of midline diastema. After that, after the elimination of the habit, there should be orthodontic therapy carried out. Okay. Next, if we talk about the orthodontic management of midline diastema, मतलब treatment plans क्या क्या हो सकते हैं. So see, either midline diastema could be closed by, देखो
अब ये टूथ है, दोनों, ये दोनों के टूथ के बीच में देयर इज गैप, सो ईदर देयर कुड बी मीजियल टिपिंग. मीजियल टिपिंग में क्या होता है, ऐसा, ये टिपिंग मूवमेंट से क्लोजर हो सकता है. और इफ देयर कुड बी व्हाट, देयर कुड बी बॉडीली मूवमेंट, बॉडीली मूवमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट what happens is sometimes when the tooth has a increased overjet, मतलब ऐसे proclined है tooth, ऐसा increased overjet, normal tooth से proclined. So if we decrease this overjet, then there is automatically closure of the midline diastema. Okay, and next last option is overall orthodontic treatment. Okay, so first if we see closure by mesial tipping of the tooth or mesial tipping movements. So in this what happens is we need 2 mesial movement finger spring, 2 finger spring बनाना है for the mesial movement and then the tooth would move. There could be split labial bow also used या फिर orthodontic bands and elastics, which is also a source of anchorage. Comment down below which kind of anchorage is this. Okay, next there could be closure by bodily movement. So closure by bodily movement, it could be with the use of edgewise or the pre-adjusted edgewise appliance and Begg's bracket with passive uprighting springs. Next is there could be closure by overjet reduction. So what happens is जैसे ओवरजेट रिडक्शन होगा, जो मैक्सिलरी आर्च की लेंथ है, मैक्सिलरी लेबियल सेगमेंट, उसमें क्या होगा, एक स्मॉलर पेरीमीटर में वो आ जाएगा. मैक्सिलरी आर्च बिकॉज ऑफ द प्रोक्लाइंड एंटीरियर्स, व्हाट हैपेंस, ओवरजेट ज़्यादा है, एंटीरियर्स प्रोक्लाइंड है बेसिकली, तो जो मैक्सिलरी आर्च है वो एक लेसर सेगमेंट में आ जाएगा. दैट वुड लीड टू ऑटोमेटिक क्लोजर ऑफ द मिडलाइन डायस्टमा. दिस कुड बी अचीव्ड बाय 2 ईदर हॉलीज अप्लायंस से हम लोग रिट्रैक्ट कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड अप्लायंस थेरेपी. The last method is the overall orthodontic treatment. This is carried out with the help of fixed appliance mechanotherapy. Other than that, there are few actually other methods of treatment of this, which is what, restorative management. अगर बहुत small amount of diastema है तो फिर उसको हम restorative composite से भी कर सकते हैं. रेस्टोरेटिव मैनेजमेंट किससे, कंपोजिट. अलॉन्ग विद दैट देयर इज प्रोस्टोडोंटिक मैनेजमेंट. अगर बिग डायस्टेमा है, so this could be closed by jacket crown. I'm writing JC only, okay, or by composite build up. Okay, next there could be surgical management. अगर खाली midline diastema और पूरा normal occlusion है तो फिर surgical management. If there is only midline diastema with normal occlusion, then surgically it has to be corrected. The tooth has to be moved and the midline diastema has to be corrected. So this is it about the midline diastema. In the coming videos, we'll be talking about cross bite, deep bite, open bite, which is very important for exam point of view. So stay tuned, keep visiting. Also, do not forget to like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.